मैंने सबसे पहली दफ़ा जब इनके बारे में सुना तो मुझे एक फ्लायर मिला जिसमें मुझे नज़र आया कि एक साहब जिन्नों के बारे में बात कि शायद मैं पैदाइशी तौर पे कोई मौलवी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी के शहर से। मुझे ना माँ बाप के एक्सेसिव लाड प्यार ने अच्छा खासा खराब किया था। दिस इज मी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये मेरा बिफोर वर्जन है, अभी तो आप आफ्टर देख रहे हैं। जब मैं इंग्लैंड गया तो वहां पे मैंने वन ऑफ द फर्स्ट क्लब्स दैट आई जॉइंड देयर वाज एक्चुअली द स्काई डाइविंग क्लब। ऐसा करते हैं, आसमान तो देख लिया, अब जाके ना समुंदर देख के आते हैं। सो आई ट्रैवल्ड ऑल द वे टू द मालदीव आइलैंड्स टू डू स्कूबा डाइविंग। देन आई थॉट ऐसा करते हैं यार, किसी ऊंचे से पुल से छलांग मारते हैं जाके। अब मैंने कहा भाई ढूंढो ऊंचा सा पुल कहाँ मिलेगा। तो मैं सोचता रहा कि मैं इनको कैसे जानता हूँ, तो मुझे याद आया कि मैंने सबसे पहली दफ़ा जब इनके बारे में सुना तो बिकॉज मैं लम्स की रिलीजियस सोसाइटी के साथ इन टच था, तो मुझे एक फ्लायर मिला जिसमें मुझे नज़र आया कि एक साहब जिन्नों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन सा टॉपिक है बात करने के बारे में। और बाद में पता चला कि टॉक भी बड़ी अच्छी गई, बड़े लोग आए थे। तो समझ नहीं आई कि लोगों को जिन पसंद आए थे, स्पीकर पसंद आए थे। बट उसके बाद से एक ना एक सरसरी जो है ना कोई तारुफ हुआ। फिर मैं इनको यूट्यूब पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, सुनता रहा। सो देन वन ऑफ माय कॉलीग्स, क्या कहते हैं, जो यूथ क्लब से जिनका ताल्लुक है, एंड ही इज आल्सो माशाल्लाह डन ट्रेमेंडस वर्क फॉर यूथ क्लब। सो उन्होंने जो है ना, हमने 14 फरवरी से पहले एक BNU ISOC के लिए इवेंट करवाना था, एंड थ्रू हिम आई कॉन्टैक्टेड राजा भाई, एंड ही वाज काइंड इनफ, आई टेल यू, कि ही ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जस्ट टू गिव अ सेशन फॉर द BNU नहीं किया, एंड ही केम, ही गेव द टॉक। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, राजा भाई को ये बात नहीं पता, मेरी कतई नियत नहीं थी वो सेशन अटेंड करने की, लेकिन वो शर्मा शर्मी मैंने कहा कि मैं को 5 मिनट ना बैठ के थोड़ी सी वो हाजिरी लगा के गायब हो जाऊंगा। तो लेकिन वो 5 मिनट बैठने के बाद बिल्कुल उठने का दिल नहीं किया। एंड अल्लाह ताला ने माशाल्लाह जो है ना इनको बात करने का, यूथ को समझाने का जो है बहुत ज़बरदस्त वो दिया, और ये महज अल्लाह की देन होती है। एंड आई फील दैट यूथ क्लब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, राजा भाई हिमसेल्फ, यू कैन जॉइन हिज फेसबुक, यूट्यूब पेजेस एज वेल, दे डूइंग ट्रेमेंडस वर्क इन टर्म्स ऑफ हाउ टू प्रेजेंट इस्लाम टू द यूथ। बिकॉज हमारे मुल्क में बहुत सारे यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे जो हैं दीन के बारे में जो परेशान हो जाते हैं, अक्सर घबराए हुए होते हैं कि दीन बहुत मुश्किल है, या उसकी ब्रांडिंग जो है ना उनको वो रिलेटेबल नहीं लग रहा होता। And he for one, I actually with all sincerity don't think कि जो काम यूथ क्लब इस वक्त पाकिस्तान में कर रहा है वो कोई भी जो है ना प्लेटफॉर्म उस लेवल पे, उस तरह से और उस डाइवर्सिटी के साथ कर सक रहा है, whether that's राजा रजा साहब और देयर अदर टीम, मुगीरा लुकमान है और इसी तरह और लोग हैं। सो राजा भाई जज़ाकल्लाह खैर कि आपने दोबारा मेरे सिर्फ एक व्हाट्सएप पे जो है ना, यू वर द फर्स्ट वन टू एग्री। So we would love कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें। lot of people they want to change and they want to get inspired कि कैसे जो है ना consistently दीन की तरफ आया जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। असलान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर माशाल्लाह, एंड टू बी एबल टू शेयर माय स्टोरी विद ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। मैं अपनी स्टोरी का जो है वो आगाज़ अपने बचपन से ही करता हूँ इंशाल्लाह, बिकॉज ऑफन टाइम्स व्हेन पीपल लुक एट मी लाइक दिस दे थिंक कि शायद मैं पैदाइशी तौर पे कोई मौलवी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो बड़ा ही एक नॉर्मल जिस तरह लोगों का होता है उसी तरह से था। आई बिलोंग टू अ मिलिट्री बेस्ड फैमिली, माय फादर बीइंग इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड माय ग्रैंडफादर आल्सो बीइंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो बेसिकली मैं एक फौजियों की लाइन से आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी के शहर से। अभी वैसे मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली वी मूव्ड हियर अबाउट 2005 में हमने यहाँ मूव किया है। लेकिन उससे पहले वी बीन इन पिंडी, और उससे पहले चूंकि फादर का ताल्लुक आर्मी से था तो वी केप्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कभी हम लोग एक शहर में, फिर दूसरे शहर में, और ये हमारा बेसिक आप कह लें कि हो रहा है। लेकिन आई वॉज ऑलवेज द रिबेलियस टाइप इन माई हाउस, बिकॉज मुझे ना माँ बाप के एक्सेसिव लाड प्यार ने अच्छा खासा खराब किया था। बिकॉज आई वॉज बॉर्न आफ्टर 3 सिस्टर्स। तो नेचुरली आपको पता है हमारे इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जब बेटियां होती हैं तो लोग जरा थोड़े से ना परेशान हो जाते हैं। और हालांकि हमारा दीन ये बात नहीं सिखाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तो अगर आपकी 3 बेटियां हैं और आप उनको सही तरह से पाल पोस के बड़ा करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत आपने ये दी कि वो शख्स जो कि अपनी बेटियों को यूं पालेगा वो और मैं क़यामत के दिन यूं होंगे, यानी बिल्कुल साथ होंगे। तो उन सहाबी का अल्लाह भला करे जिन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह अगर 2 बेटियां हो तो फिर क्या, तो आपने फरमाया 2 वाला भी ऐसे ही होगा। तो हमारे लिए 2 बेटियां होना बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत बड़े शर्फ की बात है। बट बिकॉज हम लोग सब कॉन्टिनेंट, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में रहते थे और हमारा एक उनके साथ वास्ता ताल्लुक था, तो वहाँ पे लड़कियों की जो थी ना वो कदर नहीं थी जो कि हमारे दीन ने बताई है, जिसकी वजह से आप कह लें कि जो है वो एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ वही मसला जो है वो यहाँ पे काइंड ऑफ शिफ्ट कर गया। सो खैर एनीवे, मैं जब 3 बहनों के बाद पैदा हुआ तो एक्सेसिव लाड प्यार जो है ना माँ बाप का, उसने मुझे काफ़ी बिगाड़ा। एंड
बेसिकली मैं यहाँ से अपनी कहानी का स्टार्ट करता हूँ. तो आई रिक्वेस्ट अरसलान भाई टू ब्रिंग अप द स्लाइड्स एज वेल सो आई कैन शो यू step by step that journey inshallah. So this is me as you can see on the screen. ये मेरा before version है. अभी तो आप after देख रहे हैं ना. तो this is my before version. Basically मेरी जो education है, I did my O levels from Beacon House. उसके बाद मैं I wanted to join the armed forces as I was kind of raised in an army background. लेकिन माँ बाप ने रोक दिया because they knew कि इसके फड्डे शड्डे भी होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़ जाता है. तो they thought कि आर्मी में जाएगा तो ये जो है ना मजीद किसी dangerous हरकतों में पड़ जाएगा. So my mother she really wanted me to do like a nice engineering degree or something of the sort. तो I thought कि चलो ये अच्छा opportunity है माँ बाप को blackmail करने का. तो अगर engineering करनी है तो यहाँ से नहीं करनी, कहाँ से करनी है फिर? इंग्लैंड से करनी है. So I decided to leave Pakistan and go to England. Now imagine कि एक लड़का जो O levels, A levels करके फारिग हुआ है, वो सीधा इंग्लैंड चला जाता है. यानी you can hashtag this Pindi boy in London. So Pindi boy लंदन में जाएगा तो खुद सोच लें कि उसके ज़हन पे क्या असर पड़ा होगा. So I got into a lot of bad stuff. I mean, I don't need to go into the details of that. But apart from the bad stuff, I also got into some extreme sports because शुरू से एक rebellious सी nature थी. I wanted to, you know, experiment with life and things like that. So हमारे घर में deen was never a priority. तो क्या दूर की बात है. I mean, I wouldn't say it was on the map. Like नमाज पढ़नी है ठीक है पढ़ लो, यानी जिसने पढ़नी है पढ़ो, वरना ना पढ़ो तब भी ठीक है. You know, the philosophy in the house was कि you know you have to be just a good person at heart. That's what really matters. और रोजे भी ना रखो तो अच्छा है, क्योंकि वैसे ही रोजे रखोगे बेटा तो पढ़ाई नहीं होगी. और पढ़ाई के मामले में my family was very serious. मतलब मेरे घर में ये एक रूल था कि मैथ्स में अगर आपके 99 नंबर आए out of 100, so my father would say, "Okay, my son, you failed by 1 mark." So that's how strict we were in terms of academics. But when it came to deen, I mean, everything was optional. Namaz optional, roza optional. बल्कि मुस्तहब ये था, मुस्तहब हम कहते हैं ना, something that's highly recommended. Recommended ये था कि रोजा ना रखा जाए, क्योंकि रोजा रखने से काम में academics में रुकावट होगी, उस तरह पढ़ नहीं पाओगे, you know, dehydrated रहोगे सारा दिन. So this was the kind of background I'm coming from. But having said that, जब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ पे मैंने one of the first clubs that I joined there was actually the skydiving club. So you can see me right there sitting in the middle waiting for my first skydive. And obviously it goes without saying that I didn't tell my parents anything because obviously I'm not crazy. And अगर मैं उनको ये बताता कि मैं वहाँ पे skydiving कर रहा हूँ तो अगर उनको अल्लाह माफ करे हार्ट अटैक ना होता तो हार्ट अटैक से कम भी ना होता. So this is what your face looks like when you've jumped out of the aircraft for the first time. So I did that experience, बड़ा मजा आया. Then I tried it again and again, and really got hooked onto skydiving. And this is not those tandem skydive jumps. अगर भी आजकल अगर आप as a tourist कहीं जाते हैं, you go to Dubai or Thailand or somewhere and you want to skydive, वो आपको ना इंस्ट्रक्टर के साथ बांध देते हैं. यानी you jump with the instructor. So basically the instructor does all the work. You just tag along for the ride basically. लेकिन मेरे साथ ये मामला था कि आई एक्चुअली लर्न स्काई डाइविंग. सो इट वाज लाइक अ 10 डे का आपका कोर्स कराते हैं, उसके बाद आपको फिजिकल होता है, आपको काफी एक्सट्रीम टेस्ट से गुजरवाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि योर बॉडी विल बी एबल टू हैंडल इट, एंड ऑल्सो इफ यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ प्रेशर. बिकॉज अगर आपका फर्स्ट शूट मतलब खुदा न खास्ता ओपन नहीं होता तो देन यू हैव टू गो टू द बैकअप, एंड उसके लिए बड़े आपको नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए होते हैं टू बी एबल टू रिलीज द फर्स्ट शूट एंड देन ओपन अप द बैकअप एंड ऑल दैट. सो दैट्स टेक्निकल स्टफ. बट एनीवे आई डिड द स्काई डाइविंग, लव्ड इट. बट द थिंग इज के you know, मैं एक फलसफे पे जी रहा था. मेरी लाइफ का जो है ना एक फलसफा था, and that was you only live once, YOLO. आप लोगों ने शायद सुना होगा. So मेरी जिंदगी का तो मकसद ये था कि जिंदगी एक दफा मिलती है, खाओ पियो जियो ऐश करो, that's what life is. So I was always looking for the next entertainment, the next way to please myself, because अपनी नफ्स का पुजारी जब इंसान जो है ना बन जाता है, फिर उसको अल्लाह रसूल याद नहीं आता, उसको बस अपनी ख्वाहिशात के ही पीछे बस भागता है और उसका कोई एंड नहीं है. So खैर anyway, after having done skydiving, I thought, what now? तो an idea came into my mind कि ऐसा करते हैं, आसमान तो देख लिया, अब जाके ना समुंदर देख के आते हैं. So I traveled all the way to the Maldives Islands to do scuba diving. So you know, scuba diving करना, snorkeling करना. So I got my whole scuba gear and all that, and I got myself like a waterproof camera. जहाँ मुझे मछलियाँ नजर आती, मैं उनको इकट्ठा करता, come on guys, और फिर उनके साथ सेल्फियाँ लेता, बड़ा मजा आ रहा था. But then even that fun finishes after a while. You know, ठीक है, आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, कितना अरसा आप पानी में रह लोगे. After a while you get bored of it कि यार ठीक है, हो गया, मतलब now it's very mundane, now what? And you know, जब आप लैंड कर रहे होते हो इन डेस्टिनेशंस पे, आपको बड़ी एक एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है. बट यू नो 2-3 दिन गुजरते हैं, आप कहते हो यार बस यही था, that's it. I mean all that hoo-ha for nothing. And so this is the kind of
thing we are following, हम लोग मतलब ना अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कुरान मजीद में कि बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज ओनली एन एंजॉयमेंट ऑफ डिसेप्शन। थोड़ी दिन के लिए मजा आता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, चस्का इसमें जरूर है, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो चस्का ही है, वो कोई लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है। सो खैर एनीवे, आई गॉट डन विद माय स्कूबा डाइविंग स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस। देन आई थॉट अब क्या करूं, अब फिर मुसीबत पड़ गई। हाँ जी सोचो, देन आई थॉट ऐसा करते हैं यार, किसी ऊंचे से पुल से छलांग मारते हैं जाके। अब मैंने कहा भाई ढूंढो ऊंचा सा पुल कहाँ मिलेगा, तो फिर मैंने चेक किया तो पता चला कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का अवार्ड जो है ना, वो साउथ अफ्रीका में एक पुल को मिला हुआ है, उसका नाम है ब्लोक्रांस ब्रिज, जहां से आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं। तो आई थॉट ओके लेट्स गो टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चलते हैं जी। तो साउथ अफ्रीका चले गए, वहां से बंजी जंपिंग, फॉर दोज ऑफ यू हू डोंट नो, इट्स बेसिकली वो आपके पाँव के साथ एक बंजी कॉर्ड होती है, एक रोप टाइप चीज होती है, वो बांध देते हैं, एंड देन उसके बाद you just let gravity do the thing, basically you just jump and the bungee cord will hopefully stop you before you hit the ground, hopefully इंशाल्लाह। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम बस इसी उम्मीद पे होते हैं कि इंशाल्लाह ये रोप जो है ये आपको हिट करने से बचा लेगी जमीन पे। सो आई डिड दैट, ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, बड़ा मजा आया। और शायद आप लोग ये सोच लो कि जिस बंदे ने स्काई डाइविंग की हुई है हजारों फीट से, उसको कपल ऑफ 100 फीट से जंप करने में क्या फायदा है। तो फायदा ये एक्चुअली कि जो बंजी जंपिंग है ना, उसमें यू इनफैक्ट बिकम लाइक अ ह्यूमन यो-यो, बिकॉज जो बंजी कॉर्ड है वो आपको नीचे फेंकती है, फिर ऊपर ले जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो सही आपको अल्लाह याद आता है उसमें, किसी ने यानी एक एक्सरसाइज करनी हो ना स्पिरिचुअल, तो बंजी जंपिंग वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर दैट। सही आपको अपनी मौत भी याद आती है और अल्लाह भी याद आता है। सो आई डिड दैट एंड देन आई वाज लाइक नाउ व्हाट। तो इवन यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगेजिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, हर चीज का खात्मा हो जाता है कहीं ना कहीं। आप कहते हो बस ठीक है अब ये भी हो गया, नाउ व्हाट। सो आफ्टर दैट आई मतलब डिसाइडेड कि ऐसा करते हैं, आप क्या करो। तो मेरे उस जमाने में ना रोल मॉडल्स थे यही एक्टर्स एक्ट्रेसेस। हॉलीवुड का मैं बहुत बड़ा फैन था। आई वाज लाइक I would see every like Hollywood movie that would come out, A-rate movie or B-rate, or who cares, I would watch it. And literally I would sometimes do like binge, like watch maybe 4 or 5 movies in a row, sometimes दोस्तों को बुला लिया, 5 मूवी मैराथन चल रही हैं। तो I was really into that. So I thought, why not become an actor? That's a good idea. So although I was working, because मैंने अपनी बैचलर्स किया था इंग्लैंड से, मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में ऑस्ट्रेलिया से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से। उसके बाद जब पाकिस्तान वापस आया हूँ आफ्टर डूइंग ऑल दीज क्रेजी एक्सपीरियंसेस, आई वाज वर्किंग अ 9 to 5 जॉब इन द IT टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन माय 5 to 9, तो 9 to 5 तो ऑफिस जॉब थी, 5 to 9 आई वाज विद थिएटर। और थिएटर में मैं एक्टर बन गया, और कुछ अरसे बड़ा मुझे मतलब 2 साल के पीरियड में मैं एक्टर था। और इस छोटे से पीरियड में आई गॉट अ लॉट ऑफ फेम एज वेल। एंड आप कह लो कि आई वाज, फॉर एग्जांपल उसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स बताता हूँ आपको। ये जो आर्टिकल आप सामने देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम GT मैगजीन, गुड टाइम्स मैगजीन ने 12 पेजेस का मेरे ऊपर आर्टिकल लिखा। 12 पेजेस, लाइक वो जो है ना, बचपन में टीचर कहती थी राइट एन एसे ऑन योरसेल्फ, आई कुडंट राइट मोर देन 2 पेजेस एवर, and these guys wrote 12 pages on me. And then Indian newspapers ने review किया कि जी next superstar coming out of Pakistan is going to be this guy, check out this space for more information, all that. I was awarded by the president of Pakistan, I was interviewed on CNN. मतलब बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे अरसे में ना I was kind of skyrocketing. And अभी इस वक्त जो आपके मीडिया इंडस्ट्री के super celebrities हैं right now, I know a lot of them really well, and a lot of them have actually worked with me. Some of them I've even auditioned for my own plays. So अब आप खुद सोच सकते हैं कि मैं छोटे से अरसे में एक्टिंग से स्टार्ट किया था। Within 6 months I went into direction, production, and before you know it I was doing my own plays and hiring people and all that. तो बहुत जल्दी ये जो ना फेम की तरफ बढ़ रहा था, and I saw like a little flavor of that celebrity lifestyle, and I was like, this looks very attractive and looks very appealing. But मैं आपको बताऊं कि इस पूरे lifestyle के अंदर ना, despite all the fame and everything that you're getting, I still wasn't happy. Now you might be thinking कि यार ये बंदा पागल है, क्योंकि दुनिया में सैरें कर रहा है, अयाशियां कर रहा है, पैसे माँ बाप ने खूब इसको लुटाए हुए हैं इसके ऊपर, because I belong to a very mashallah good family from the perspective के financially very stable है and all that. But the thing is कि despite having all of these things, still I wasn't happy. So for those of you who are sitting out there listening कि यार ये बंदा नाशुक्रा हो रहा है or something like that, believe me, I felt that way, because सब कुछ होने के बावजूद भी ना, जो खुशी और सुकून और इत्मीनान मैं सोच रहा था कि वो होता है ना कि at the end of the rainbow I'll find that little pot of gold,
I couldn't find that pot of gold. No matter where I would go, I would never be able to find that pot of gold. And I looked everywhere. Believe me, I looked everywhere. Until I became like this. Okay? And that's when I found the pot of gold. Now you might be thinking कि ये बहुत cliche बात कह रहा है, but I swear upon Allah, I swear by Allah, wallahi, I can not stress upon this enough कि जिस सुकून और खुशी और आराम और चैन और इत्मीनान को मैं ढूंढ रहा था ना, वो मुझे अल्लाह के पास ही मिला। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान मजीद में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, only in the remembrance of Allah will your hearts find rest. वो जो एक इत्मीनान होता है ना कि आप लंबा सा सांस लेते हो and you feel like so relaxed, you only find that in Islam. दुनिया के किसी और चस्के में ये सुकून नहीं है, किसी और लज्जत में ये सुकून नहीं है। Believe me, been there, done that. ठीक है, nothing's there. और मैं जब दीन की तरफ आया ना, लोगों ने कहा it's a phase. लोगों ने कहा it's a phase. A lot of people said it's a phase. ये देखो phase है, ये इसको जुम्मा 8 दिन देखो ना, ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वगैरह वगैरह। इस तरह की you get to hear a lot of that stuff. But I can assure you कि now it's been what, over 10-11 years now that I'm upon the deen, alhamdulillah. Or not only upon the deen, I'm teaching, I'm preaching, I'm doing all things, I'm traveling everywhere. जिस तरह भी जो ना अरसलान भाई ने भी बताया, travel भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अभी आजकल कोविड की वजह से थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है, but alhamdulillah, even then, even with the COVID outbreak, still I'm doing maybe like 2, 3 or 4 lectures a day online. You know, तो अभी भी माशाल्लाह डिमांड वही इसी तरह चल रही है। I even go to the TV, वहाँ पे भी शोज होते हैं। So अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। पर मैं आपको बताऊं कि really वो जो सुकून और खुशी थी ना, वो इसी चीज में थी। Now before I go into how did I just find Islam, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि वो क्या वजूहात थी या वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मैं इस्लाम की तरफ आया। Now one thing is कि ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो मेरा थिएटर का टाइम था, जब मैं ड्रामा और एक्टिंग में था और इस तरह से, आई वाज हैंगिंग आउट विद, बिलीव मी, म्यूजिशियंस या आपके जो इस वक्त ए लिस्ट म्यूजिशियंस हैं, उनके साथ हैंग आउट करना, उनके साथ पार्टी करना, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, यू नेम इट, ठीक है। एंड आई सॉ विद माय ओन आईज व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। आप लोगों को ना टीवी पे नजर आता है बड़े माशाल्लाह लोग तमीज से आते हैं ना, स्पेशली रमजान के महीने में तो एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी सरों पे दुपट्टे लेके आ जाती हैं कि माशाल्लाह रमजान का बाबरकत महीना और ये आपके साथ और ऑल दैट, यू नो। और अक्सर आपको ये बात नजर आएगी कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो दीन पढ़ा रहे हैं ऑल दैट, मतलब रमजान के महीने में। आउटसाइड ऑफ रमजान फुल पार्टी ऑन होती है, लेकिन रमजान के महीने में सारे शरीफ होकर आ जाते हैं। मैंने बिहाइंड द सीन्स देखा हुआ है the lives of these people, a lot of these people, let's not generalize and say सारे ऐसे हैं, but मैं बता रहा हूँ a vast majority is like that, कि जहाँ पे कोई दीन ईमान नहीं। और मैंने वो हरकतें देखी हैं कि मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि इतना मैंने गोरों को भी खराब नहीं देखा। I've traveled across the world, I've traveled all over Europe, I've traveled to Australia, I've traveled Southeast Asia, you know। मैं आपको बताऊँ, मैंने यानी गोरों को भी पार्टी करते देखा है, बट मैंने उनको इतना आउट होते नहीं देखा जितना मैंने पाकिस्तानियों को देखा है। हम पाकिस्तानी जब आउट होते हैं ना, अल्लाह अकबर, ऐसे आउट होते हैं कि गोरा भी बेचारा शर्माता होगा कि यार ये हो क्या रहा है, कि स्टार्ट हमने किया था एंड इन्होंने कर दिया। So this is the kind of stuff I saw, and really that was depressing for me because I was shocked कि यार इस तरह भी होता है, because I thought कि Pakistanis would be better, क्योंकि अब मैं O levels वगैरह करके तो निकल गया था। I did not realize कि ये यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। When I came back I was shocked. What happened to my city? What happened to everybody? You know, ठीक है, मैं तो आउट था, मुल्क से बाहर था, अपनी याशी में था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है पीछे से। So that was kind of driving me crazy, and so being in that state, I couldn't cope up with the pressure from different people on me, because this was the time when I got married as well, and मेरी marriage हुई भी, by the way, love marriage थी, surprise, but when I got married, I became very protective of my wife naturally, कि मैं तो जिन environments में जाता हूँ, my wife shouldn't be exposed to this kind of stuff, and although she also comes from a background जहाँ पे वो अपनी जिंदगी के शुरू के 4 बल्कि 6-7 साल बेल्जियम में रही हैं, born and raised है, वो पाकिस्तानी है, but she was born and raised in Belgium, and मैं भी गोरा मेंटालिटी में था, वो भी गोरा मेंटालिटी में थी। Whatever she was on the outside, inside I knew that there was haya in her, और ये मैं आपको एक वैसे ब्रादराना मशवरा दे रहा हूँ, to all the guys out there and to the girls out there। You see, एक लड़का जितना भी प्लेयर हो जाए, ठीक है, एक बंदा जितना भी आउट हो जाए ना, जब वो शादी करने की बारी आती है ना, he wants a decent woman, because there is no way that you want to bring in a girl that you picked up from a club or a pub or a discotheque to be part of your house। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ, बिल्कुल बाहर का मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि ये जिस लड़की को आप घर लेके आएंगे ना, उसने ना सिर्फ आपके साथ रहना है, उसने आपकी फैमिली को भी फेस करना है, उसने आपके अजीजो कारब को फेस करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस हैज टू काइंड ऑफ वर्क हैंड इन हैंड. We found out that my wife was expecting, and when we found out, we went to the hospital and we spoke to the doctor. And after a few months, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी आप अल्ट्रासाउंड के लिए आ जाएं. अल्ट्रासाउंड के लिए हम जाते हैं तो डॉक्टर से पूछा कि भाई we'd like to know the gender of the baby, and the doctor said it's a girl. So I ended up in a terrible accident. This was one of the biggest accidents in the history of the Middle East, maybe, or maybe Asia, I don't know. तकरीबन 400 गाड़ी इसमें लगी थी.